Hello, people. Hello, everybody. Yeah, you're the first to join. Hello, everybody. Good evening. So, let me start now. Good evening, everybody. Welcome back to UG Talks with the Toppers with Priya. I hope you all are doing good and आज आप लोगों के लिए आई थिंक सरप्राइज नहीं है, पहले से ही आप लोगों को पता है कि we'll be having three really motivating and famous personalities here with us. और क्या आप जानते हैं कौन कौन आ रहा है हमारे सेशन पे? ओके, सो we'll be yeah we'll be having three very motivating personalities on our session, on our UG Talks. That is Mr. Navneet Sikera, who is an IPS, Ravindee Singal, who is also an IPS, and Safin Hasan sir, who is also an IPS. So we will be having three Indian Police Services people on our session, and I hope it is motivating and it is inspiring for you. I try my best. काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे और काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशंस में होंगे, इस अटेम्प्ट के लिए वर्क कर रहे होंगे, राइट? ओके, लेट अस वेलकम देम. Hello sir, good evening. Just a second. Hello Safin sir, good evening sir. Okay, just wait for some time. I'm trying to join all our three guests. I think there is some problem. Hello Ravindee sir, good evening sir. Can you see me? Is it okay? Yes sir. Yes sir, you are visible and audible. Wonderful. Thank you so much. How are you? I'm fine sir. How are you? Nice. Just waiting for Navneet sir and Safin sir. He will take little time. I saw Safin just a moment back. Just check it. Yes sir, I'm trying to accept the. Yeah, Safin sir is here. Hi, Good Safin. evening sir. Good Same, evening. sir. Good to see you again. Thank you, sir. Same here, sir. It's a pleasure and honor to join with you, Same here. I'm sorry I'm not in uniform. And good to see sir. you. Is my Sir, I'm audio video clear? Yes sir, Clear for me. it's I can properly hear you. audible. Yeah. Fine. Just a second sir, I'm waiting for Navneet sir. You know. I hope you both had a great day. I had a great hectic day. Yeah, same here. It's still going on. Yeah, it's going on. You're right. Day doesn't stop for us. It is 24 hours day. Yes, definitely, sir. Anytime you can be called, disturbed, or whatever. You're supposed to be present.
Sir, I'm just waiting for Navneet sir. He has not sent a request for joining. So He will take little time. He has sent message that he will join in by 7:10. So you have 4 5 minutes, 6 minutes. Yeah. okay, okay. So actually, my the first question that I decided for this session was that I wanted to know कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप लोगों ने फाइनली अपनी लिस्ट में नाम देखा था बिकॉज अभी इस टाइम पे काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी इंटरव्यू देने वाले हैं और हो सकता है उनका सिलेक्शन हो उनका सिलेक्शन ना हो तो एक्चुअली ये प्रिपरेशन वाला टाइम चल रहा है प्रिपरेशन वाला सीजन चल रहा है गेटिंग इनटू द प्रिपरेशन सो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आपने अपना नाम लिस्ट में देखा था रविंदर सर Thank you so much. It was a surprise because I was living in Delhi only at that time because I belong to Delhi. So I got a call that result has been declared. I mean the UPSC 96. So a lot of apprehensions, and there's nobody, none of my friend. I could not connect anybody. So I on my own went there to see whether my name is there or not, because it's very difficult. You know, even if you are 100% sure that you will be selected, your name will be there. It's extremely difficult. But yes, once I went there and could see my name on the list, that was a great feeling. And because that was serious attempt from my side, and I thought, yes, the destination where I wanted to go, the goal which I had visualized, it has come true. So amazing feeling. Then my girlfriend at that time, my wife now, she also got into IES. That was a double happiness. So difficult Bonanza. words, but yes, it was a dream come true, and we really enjoyed. She had come with her dad. Till then, he didn't know that I'm there. So happy feeling, great feeling. And with this, I also wish to compliment and congratulate all those who have been selected for into this year. My best wishes, and today maybe we all will be interacting or maybe trying to tell how they should be and how they should prepare, what their mind frame should be. We at least would be touching all those issues. Safin, over to you. Thank you so much, sir. Again, like the day was full of anxiety. I still remember it was 27th of April 2018. So I was with my friends and the माहौल सुबह से बनना start हो जाता है कि अभी आ रहा है अभी आ रहा है. The Telegram group becomes hyperactive, the WhatsApp group becomes hyperactive. थोड़ी देर में आएगा थोड़ी देर में आएगा. So we started waiting from 11 a.m. in the morning, and the result actually came at 6:35 in the evening. So spending those 7 hours, वो 7 घंटे बिताना was very tough. एक बार जो आपके मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो रही है, आप घर पे नहीं हो, एंड पहले बोलेंगे कि भाई आज नोटिस बोर्ड क्लीन हुआ, फिर बोलेंगे कि उसका बल्ब चेंज हुआ, फिर बोलेंगे कि पुराने पेपर्स हटाए गए, फिर बोलेगा आपको Safin, एक just बंदा बाहर interruption. आया. I can't hear you properly. yes sir your voice is a bit low Okay, fine. I'll just. I'm so sorry for interruption. Am I audible now? Wonderful. yes sir now Yeah. you're right. So सुबह 11 बजे से माहौल बनना स्टार्ट हो जाता था. उसमें अभी बल्ब चेंज हुआ, अभी नोटिस बोर्ड क्लीन हुआ, अभी पुराने पेपर्स हटाए गए, अभी कोई बंदा अंदर गया, कोई बंदा बाहर आ रहा है. तो वो डे मतलब मिनट टू मिनट्स अपडेट आ रहा है और आपको लग रहा है कि अभी आएगा. एंड देन व्हेन द रिजल्ट फाइनली केम एंड आई गॉट द पीडीएफ, मैंने इमीडिएटली नाम सर्च किया एंड आई सॉ माय नेम इन द लिस्ट. इमीडिएटली थोड़ा डिसअपॉइंट था बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना रैंक आएगा. बट सिंस आई हैड द हिस्ट्री विथ माय एक्सीडेंट एंड इंटरव्यू स्टफ, one of my senior called me and he's like, you should be thankful, you should be grateful that you are in the list. क्योंकि काफी एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो काफी अटेम्प्ट के बाद भी नहीं कर पाते which you have achieved. And then I realized that okay, I am blessed, and उस हिसाब से then I started enjoying. I informed my parents, and there was the एक अच्छा खासा खुशी का माहौल बन गया था. And then you suddenly realize that
व्हेन जैसे लोगों को पता चलता है कि आप यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, उनका जो एटीट्यूड, उनका आपकी तरफ का बिहेवियर जैसे चेंज हो जाता है, तो यू फील दैट योर लाइफ हैज चेंज 180 डिग्री। एंड दैट वाज द फीलिंग, वाज फीलिंग हैप्पी, ऑफ कोर्स वाज फीलिंग रिलीव्ड, क्योंकि बहुत सारा लोड था एक्सपेक्टेशंस का एंड उसका, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर करके, मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे हो, तो काफ़ी होप्स बढ़ जाती है लोगों की आपकी ओर। तो उस हिसाब से yes, it was the most memorable day of my life, especially looking at faces of my parents, which made me feel proud. So yes, it was one of the most memorable day for me too. Thank you. Sir, as you told, Ravinder sir, as you told that your girl, matlab, your wife now and then your girlfriend got into the list. So many people tell us that ये काफी distracting होता है having somebody by your side while you are preparing for civil services. So didn't it work as a distraction for you? Sorry for I take asking. no, it's okay. I mean, many times, but I that if your goal is clear, if you're working in that direction, if you're not, in fact, we were complementing each other. We would discuss for hours together. Suppose there's a question, and we met and we in one of the training. I won't name the institute. We met there when we were there for 7 days. That crash course for interview preparation 2 years back. So we met there, and from there it continued till we got selected, and later on that we went together to academy. So the point I want to make is that these things doesn't disturb you. They disturb you if you are doing your preparation on flimsy level. If you are not focused, I think sometimes you need a person whom you can tell everything, with whom you can discuss everything, because during preparation there will be many factors which will be disturbing you. There will be many things which will be pulling you down. Many a times when you discuss certain things, you will feel that you are not prepared well. So at that time, you need a shoulder with whom you can discuss and tell. But these things actually help you. There is no harm in having a friend, a boyfriend or girlfriend, doesn't matter. But if you are not distracting from your vision of the goal, then I think these things doesn't matter, because the other person is also preparing for that only. And if there is a clarity, there's no distraction, there's no problem. I take it this way. And it happened actually that way, when we were not first attempt I got into CISF. Next, we both could not. Third, we got into this. So I think there was a progress when we were moving ahead. So that all paid, and it's good if you know somebody who can help you, who can guide you. I take it that way. So that's really nice to know. Uh, I think Navneet sir is still not here. So we'll continue with the session, and then when we can welcome him like Yeah. later on. Definitely, definitely. Safin, Safin sir, I would like to ask you कि अभी बहुत सारे aspirants prelims के लिए बैठेंगे, और हो सकता है बहुत सारे aspirants हैं जो इस टाइम पे preparation start करेंगे. तो क्या ऐसा कोई प्री रेक्विजिट कंडीशंस होती हैं जो आप अपने माइंड में मेकअप करते हो दैट हाँ हमें ये चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर तब हम प्रिपरेशन करेंगे? बिकॉज प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन इज नॉट समथिंग दैट यू जस्ट गेट इनटू इट in one day. You have to think before that, yes, whether I am capable of doing this or not. So what are the prerequisites that you think of, that you decide, that you plan before entering into civil services preparations? I guess the most important factors are 2-3 factors which I would like to put focus on. Definitely knowledge and IQ are not the factors or criteria which I will put on priority. First and very most foremost thing which is required for civil service preparation is your dedication and your passion. Once you are, you have to convince yourself that okay, you want to sit for this exam, and the stronger the conviction, the better and the faster would be the result. Right? Once you get into the service, once you get into the exam mode, then there should not be any doubt कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं, मेरे वो क्या कहेंगे, उसका क्या होगा. So ये सारे जो आपके सवाल है उसको आप पहले से एक बार दिमाग में चर्न आउट करके then you have to be, you have to give that conviction to yourself कि मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. Once this determination comes, once this passion comes, rest all the things will follow automatically.
right? Because when you are dedicated, when you have convinced yourself that okay, you want to sit for this exam, then the discipline comes automatically, that passion for reading comes automatically, that passion for working hard comes automatically. And the question which you asked sir कि आपको distraction नहीं हुआ या ऐसा, all the things, those things already automatically go away once you have dedicated yourself for the preparation. Once you are passionate enough for the preparation, I don't think there are other factors which remain to distract you for the exam preparation. So the prerequisite part is determination and passion. If you have these two things, rest will automatically follow. I hope I have said the right thing, sir. Can you hear Priya? Yes, sir. Yes, sir. I was just checking whether Navneet sir is here or not, because somebody messaged here that Navneet sir is requesting. Okay. Okay. But yes, sir, Sure, sir. you can continue. I agree with Safin. He is absolutely nailed it so well. And I absolutely agree, Safin, the way you have explained it. Convincing our mind is very important. Our mind should accept what we are going to do. It happens in everything, in every sphere of life, whatever competition you're preparing for. Once your mind accepts and it says yes, so that's the basic thing. Until unless it is clear in your mind that what actually you want to do, nothing will happen. You will not go ahead. So first is this, and that clarity. If once that clarity comes, then of course other things fall in line, like Safin has mentioned. So our aim should be that we should accept it first and then start preparing for it. And that's a preparation that you will get a lot of ideas how to prepare, and what are the ways to prepare, who can help you, who can guide you. The material is immensely available, online, offline, everything is there. So once you are clear that you have to do something like this, then you must sit and just prepare for it. And once this preparation starts, then you should not look back that whether I'll be selected or not. You must tell yourself that yes, you're going to be selected. There can be a different result also, but until unless your mind accept that you are going to be selected, then it will be a half-hearted approach, and that half-hearted approach will not take you forward. So that's the basic prerequisite need which needs to be done. रविंद्र सर, देर आर अ फ्यू पीपल जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में होते हैं और उनकी एज लिमिट भी जा रही होती है और उनका लास्ट अटेम्प्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उनके पास सिर्फ वो 1 ईयर का टाइम होता है कि हाँ ठीक है, मुझे 1 ईयर में ही क्रैक करना है या फिर नहीं करना है, जिसमें कि चांसेस होते भी हैं कि दे माइट क्रैक दिस एग्जाम एंड ये भी चांसेस होते हैं कि दे माइट नॉट. सो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, दैट हाउ शुड दे कीप their mind focused towards the exam, because कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि सिर्फ 1 साल है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे. See, it is not that you have to clear this exam. You have to work hard. So clear hoga nahi hoga. Again, I'll come to that point. But yes, insecurity that will happen. Once you start giving it for the first time, that insecurity would be there, and it will end only when your name will be there in the list. So that insecurity will be there. In our case, I mentioned about me. Safin mentioned about himself. So that is there. That will happen only when you are selected, of course. And if you are bothered about that insecurity, I think you will not be able to move ahead. Insecurity, or something like disgusting, or what will happen after this. There will be a lot of apprehensions in your mind. तो वो होनी ही है. और वो मतलब जेन्युइनली सबके साथ में होती है. कोई ये बोले कि मेरे को 100% मालूम था कि मैं क्लियर कर जाऊंगा या मैं टॉप कर जाऊंगा, इसमें कोई बोल नहीं सकता इस एग्जाम में, बिकॉज इट इज सच अ डाइवर्स एग्जाम. और ये डाइवर्सिटी मेक्स दिस एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल. सो अनप्रेडिक्टेबल ये है तो फिर उसमें रिजल्ट कुछ भी आ सकता है. बट आपको एक चीज मालूम होगी कि आपने दिल से प्रिपरेशन किया. जैसे सफिन ने बोला कि मुझे मालूम था कि मैंने दिल से प्रिपरेशन किया. मेरा भी ऐसा ही था. जो 3-4 साल में पढ़ा तो फुल्ली डेडिकेशन के साथ में पढ़ा, और उसके साथ में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मिला. अब मैं ये समझूं कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं चलो ये भी एग्जाम दे देता हूँ, इसके लिए भी पढ़ लेता हूँ,
मैं 2 महीने इसके लिए पढ़ लूंगा. It doesn't happen that way. I think that only I can tell you or I can say. I So think I think Safin sir's internet is yeah, not working well. yeah, Yeah. little bit. So can you check with Mr. Sikera? He was supposed to be Yes, there. sir. Just wait, sir. I'll... So, and just in case there is no backup, like some people do not have a backup. Mostly, officers tell us that have a backup plan, have a backup plan with you. But कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी aspirant के पास कोई backup plan नहीं होता. Maybe शायद उन्होंने arts ली होती है. They do not know कि उसके अलावा because उसके पीछे क्या-क्या उनके पास और options हैं और फिर वो preparation कर रहे हैं. तो क्या उनको अपना time पूरा invest करना चाहिए like 3-4 years का in this examination without a backup plan? See, this is highly a personal choice. But जैसे मैं इंजीनियर था, मेरे पास में जॉब भी थे. I resigned, 2-3 jobs at one go. I was selected in CISF, but next year I had one, but I didn't want to continue there. So that risk you will have to take. And I was already working with GAIL, Gas Authority of India Limited. You see, अगर आपको कुछ बड़ा एम है आपका, बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका, तो आप उसी के लिए सोचेंगे. और मैं अगर प्लान बी तैयार करके चलता तो शायद मेरा फोकस चेंज हो सकता था. ऐसा बहुत बारी होता है. तो उसमें क्या दुविधा जब मन में रहती है, देन यू आर शेकी, यू आर नॉट क्लियर समटाइम्स. ऑफ कोर्स रिजल्ट कैन कम इन एनी डायरेक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है कि plan A, plan B, or plan C, whatever people say, I don't believe in that. Whatever you want to do, you have to do. Like any Olympic champion, if they have to win a gold medal, they only think about gold medal. I've seen many examples on YouTube wherein people took a gap. Again, they entered into Olympics and they again won the gold medal. It happens because they were working only for that goal. They didn't think if I'm not getting gold in this, I'll try for bronze medal in this, or I'll keep this ready. Doesn't happen that way. So plan A or plan B, I think this has been my philosophy. Even today, if I have to do something, I decide and then go in for it. I don't see whether the result will be negative. If I keep on focusing that result would be negative, then I think I won't be able to focus more on positivity. Safin, we were discussing about plan B. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I got a call and then it got disconnected. I tried actually joining with Wi-Fi, but it didn't work. So I'm using mobile data right now. So there is any further issue. But yeah, regarding Plan B, I guess there was a series, sir. If अगर आपने देखी हो, Aspirants. Yeah. So it has focused on Plan B in the last episode, I guess. But yes, I guess there is particular time when you need to think about Plan B, not from the initial time. Once you start preparation, you should only have that is Plan A and only Plan A. You should give your sincere attempts. आपको 2-3 अटेम्प्ट सिंसियरली देने चाहिए जहां पे आपको लगे कि आपके पास और कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है. 3 अटेम्प्ट के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी चांसेस कम है या फिर श्योरिटी नहीं है, देन देयर इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग फॉर प्लान. बट प्रॉब्लम ये होता है कि अगर शुरू से इफ यू नो स्टार्ट मेकिंग प्लान बी, देन आई एम श्योर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू गिव योर 100% टू योर प्लान ए. So when you start something new, when you start preparation, I believe that there should not be any plan B. I didn't have any plan B because मैंने just college से graduation finish किया था. I had that financial pressure कि घर का बड़ा बेटा है, middle class परिस्थिति है, तो you should start earning for your family. बट उस प्रेशर पे आई डिसाइडेड कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर मैं प्लेसमेंट में बैठा और मुझे जॉब मिली तो फिर वो डिलेमा आ जाएगा कि यार जॉब कंटिन्यू करूँ या सिविल्स में जाऊँ. Once I was determined, I decided not to sit for placement and I appeared for exam. Yes, उस टाइम पे मेरा कोई प्लान बी नहीं था. अगर 2-3 अटेम्प्ट के बाद आई फेल्ट कि मुझसे नहीं होने वाला या फिर अभी और टाइम लगेगा, तब मुझे स्टार्ट करना चाहिए प्लान बी के बारे में सोचने के लिए. सो माय सिंसियर इनपुट इज देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी इन द इनिशियल फेज. आफ्टर सम टाइम यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्लान बी. Right, sir.
सर लेकिन अगर सपोज किसी के अंदर मतलब जैसे सर ने रविंद्र सर ने बताया कि ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो इस तरीके का पैशन, इस तरीके का कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, इसको आपको मतलब कैसे पता चला कि आई हैव दैट पैशन कि मैं इस एग्जाम के लिए बैठ सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगा, इसमें कुछ ना कुछ आगे कर पाऊंगा? तो ये कॉन्फिडेंस और ये पैशन कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस और पैशन तब आता है व्हेन यू आर वेरी क्लियर अबाउट योरसेल्फ। आई वुड जस्ट टेल यू कि लाइफ में ऐसा होता है कि हम काफी सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो बाहर के लोगों के लेके घूमते हैं कि अगर कोई और बोलेगा, अगर मेरे टीचर बोलेंगे, अगर मेरे फ्रेंड्स बोलेंगे, अगर मेरा लाइफ पार्टनर या मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलेंगे कि तुमसे एग्जाम क्लियर हो पाएगा या तुमसे नहीं हो पाएगा, एंड देन आई स्टार्ट बिलीविंग ऑन दोस फैक्ट्स, और उसकी वजह से वो क्लैरिटी खुद के बारे में नहीं आ पाती। What I would suggest every aspirant to go is कि they should sincerely self-analyze themselves कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, right? I always needed a job जहाँ पे मेरे पास public dealing हो, मैं लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, लोगों के issues sort out कर सकता हूँ, and I enjoy that work. मुझे पता था कि मुझे जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेना है वो शायद सिविल्स में ही आ सकता है और किसी कॉर्पोरेट जॉब में या और तरीके से नहीं आ पाएगा, एंड दैट्स हाउ आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिविल्स में बैठना है, राइट? एंड जब आप खुद के बारे में क्लियर होते हो, व्हेन यू हैव एनालाइज योरसेल्फ इनफ, तो आपको ये भी पता होता है कि यस, आप अगर मेहनत करोगे, आप अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालोगे, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू सक्सीड। सी, सक्सेस की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि हाँ आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन आप इतनी गारंटी दे सकते हो कि आप अपना 100% दोगे। बाकी तो फिर गीता जी में भी कहा है, और देयर इज अ जनरल लॉ कि आपके हाथ में कर्म है, उसका फल क्या मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं। तो अपनी टाइम और एनर्जी ये सोचने में खराब करने की वजह कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, हम वो टाइम और एनर्जी इस चीज में इन्वेस्ट करें कि हमसे कितना हो पाएगा। उसके बाद जो देना है और जो मिलना है वो हम यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर राइट डायरेक्शन में सही इंटेंशन से मेहनत की जाए तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। Right, sir. Sir, sorry to interrupt, but I think the team is working with Navneet sir कि कैसे join करना है. I think he is having some problem with joining in this session. Okay. So We we are can working towards it. one or two questions if you feel, or we can continue. No sir. रविंद्र सर, अभी बहुत सारे आपको पता होगा कि अभी फिलहाल पे इंटरव्यूज का नोटिफिकेशन आ चुका है, और कई बार ऐसा होता है कुछ सारे बच्चे हैं जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो आने वाले टाइम में इंटरव्यू से भी आउट होंगे, और उसके जस्ट लाइक 20 या 30 डेज बाद ही प्रीलिम्स आ जाएगा वापस से। तो उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, मतलब दे माइट बी हैविंग दैट स्ट्रेस कि अभी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वी जस्ट हैव अ मंथ टू प्रिपेयर फॉर अनदर अटेम्प्ट। तो उनको कैसे, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या एडवाइस होगी? तो मुझे लगता है जो ऑलरेडी हैं तो दे आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड। उनको उनको अपने मन को ये बोलना चाहिए कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ। दैट पॉजिटिविटी दे कंटिन्यू विद। दे शुड नॉट फील कि मेरे पास एक ही महीना। देखिए, आप करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे, आपका ऑप्शन हो सकता है वही ऑप्शन मेंस में रिपीट कर रहे हो। बाकी सी सेट और जीके वो सब हो ही चुका है आपका। The only thing is that you should, or if you have some time, you can prepare for the interview. Okay? Most of the, in fact, they will be equipped. उनको तो ये समझ के चलना चाहिए कि मैं इसी तरह से प्रिपेयर करता रहा या तो I'll get into it. They just have to be in the positive frame of mind. They should not give up. They should not feel कि भाई ये कुछ से मुझे पड़ रहा है। वो समझें। इनफैक्ट उनको अपना सब चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनकी। उनको सिर्फ ये करना है कि मैं आराम से जो कुछ चीजें रह गई हैं इन दिनों में, दोज थिंग्स आल्सो आई शुड डू। मुझे ये ना लगे कि मैंने कुछ चीज छोड़ दी है। इनफैक्ट उनके पास तो सभी है। और जो आप दूसरे के पूछिए जो सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि मेंस में क्या लिखा जाता है, मेंस में क्या क्या चीजें आती है, इंटरव्यू में कौन क्या पूछ सकता है। लुक एट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी फेस्ड द इंटरव्यू और मेंस, एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट सेइंग that the person who is here, he would feel so. We are only discussing about this person so that they should not feel I'll be re-entering into the whole wheel and everything will
churned again. His mind should be absolutely clear. Yes, I'm prepared. I just have to rebrush few things and get into it. Right. तो कई बार लोग कहते हैं कि आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सफीन सर, कि आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हो तो आपको डेली गोल्स बना के रखने चाहिए, अपना डेली का टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने डेली गोल्स फुलफिल करोगे तभी जाके फाइनली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये डेली गोल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, बिकॉज उस टाइम पे किसी भी एस्पिरेंट को आइडिया नहीं होता है कि इतना ह्यूमंगस सिलेबस के साथ हम अपने डेली गोल्स कैसे सेट करें। So how to set those daily goals and how to plan accordingly and how to stick to them? सी प्रॉब्लम ये होता है कि हम डेली गोल्स पे फोकस करके हम मैक्रो विजन्स बनाना भूल जाते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक जाइए। आपके पास अगर एक साल है, एक साल प्रिपरेशन का है और एक साल एग्जाम का है, तो आपको पहले उस 2 साल से शुरू करना चाहिए कि आप किस फेज में कौन सी प्रिपरेशन करने वाले हो। मेंस के पहले आप क्या करने वाले हो, प्रीलिम्स से पहले आप क्या करने वाले हो, देन आपका जो शुरू होता है 12 महीने का जो टाइम टेबल, जो प्रिपरेशन जो एग्जाम से पहले के 12 महीने हैं, उसमें आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम कब से शुरू करोगे। तो फिर आपके पास आपको लगता है कि 9 महीने बचे हैं, फिर उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके फिर आपको आपके डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे। सो यू शुड हैव योर 6 month प्लानिंग, योर 3 month प्लानिंग, योर मंथली प्लानिंग एंड देन योर डेली प्लानिंग। व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इज कि शुरुआत में बहुत ज्यादा मोटिवेट होके या इंस्पायर्ड होके हम बहुत ज्यादा हाई लेवल के टारगेट्स अपने लिए सेट कर लेते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरी रीडिंग कैपेसिटी नॉर्मली 9 घंटे से ज्यादा नहीं है एंड मैं इनिशियली अगर 12 घंटे का टारगेट बना के बैठ रहा हूँ और फिर वो टारगेट फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, तो ग्रेजुअली दैट एक्चुअली अफेक्ट्स माय कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट एबल टू रीच योर गोल्स डेली, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी 5 घंटे की है, तो आप अपना जो टारगेट है वो 4 घंटे का बनाइए। 4 घंटे के बाद आप जितना भी अचीव कर सकते हैं वो आपका लिए बोनस पॉइंट रहेगा एंड सबकॉन्शियसली वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करेगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और इस हिसाब से आपका जो डेली टारगेट है वो चेंज होता रहेगा। कभी कभी ये भी इश्यू होता है कि डेली टारगेट सेट करने के बाद वो काफी बार पूरा नहीं हो पाता ड्यू टू अनसीन सर्कमस्टेंसेस, और उसकी वजह से एक एडेड प्रेशर हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बनना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे टारगेट्स इनकम्प्लीट, और उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हैम्पर होना स्टार्ट होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपके मंथली टारगेट्स होने चाहिए, आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए, लेकिन वो आपकी जो कैपेसिटी है उसको डिसाइड करने के बाद होने चाहिए। प्रॉब्लम होता है कि हम बाजू वाले से कंपेयर करके, अपने आसपास वालों से कंपेयर करके अपना टारगेट सेट करना स्टार्ट करते हैं, और व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन देयर इज ऑलवेज अ डिसअपॉइंटमेंट। सो आप अपने लिमिट्स जानिए और अपने लिमिट्स के हिसाब से डेली टारगेट सेट कीजिए, उसको इवनली डिवाइड कीजिए कि आपके पास अगर 6 घंटे है तो आपको उसमें से 3 घंटे करंट्स को देने, 3 घंटे स्टैटिक्स को देने, क्योंकि एग्जाम का वेटेज भी 50-50% रहता है। फिर उस 3 घंटे में क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, राइट। स्टैटिक अगर पढ़ रहे हो तो कितना पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, आपको रिवीजन का टाइम भी अलग रखना पड़ेगा और इस टाइम लिमिट को स्टिक रहना पड़ेगा। आप अगर इमोशंस में आ गए कि मुझे आज पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पॉलिटी पढ़ता जाऊँ और मैं करंट्स को नेग्लेक्ट कर लूँ, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। एंड दैट इज पार्ट एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विस ऑल्सो, कि आपको जिस चीज को जितना वेटेज देना है उतना देना पड़ेगा। आप इमोशंस में आके काम नहीं कर सकते। तो ये ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं वही से शुरू होती है। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप अपने आप को एनालाइज करके कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए हर एक चीज को और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यू आर नॉट सपोज टू कवर 100% सिलेबस एंड यू आर नॉट सपोज टू गेट 100% मार्क्स ऑल्सो टू बी इन द सर्विस। 70% सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसमें से आप 100% देके आइए, you will definitely get 60% marks and that is more than enough to be in the service. Right, sir. Right. So, I don't know, Navneet sir is still not here. So, the team is talking to him. Acha, I wanted to know, till then we can talk about something like this because I think काफी लोगों को interest आता है कि कैसी होती है Indian Police Services की training. So, sir, Ravinder sir, you were there in training, or Safin sir, you have just trained in few years back. तो क्या ट्रेनिंग की जो सिमिलैरिटी है, आपके जो एक्सपीरियंस थे और जो सफीन सर के एक्सपीरियंस थे,
वो सिमिलर है या फिर कुछ चेंजेस आए हैं अभी ट्रेनिंग के उसमें प्रोसेस में? आई वुड से ट्रेनिंग सेम ही है अभी भी, परंतु उसमें क्या होता है कि हमारा एक इंडोर ट्रेनिंग रहता है, एक आउटडोर ट्रेनिंग रहता है। तो इंडोर ट्रेनिंग है बेसिकली लॉ, criminal justice system, CRPC, all these things इंडोर्स में। और आउटडोर जो होता है वो बड़ा कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग रहता है, कुछ लोग यार सुबह उठना पड़ता है हमको 5 बजे, फिर हमको 5:30 बजे कॉल इन होना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है, ये सब चीजें होती हैं। आई थिंक नवनीत इज No, sir. I guess, yeah, Priya madam got राइट। history. ओके, जी sir. तो No, sir, I'm here. जो मैं बोल रहा था कि आउटडोर्स हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं। कई बार ये डिपेंड करता है कि जो हमारे डायरेक्टर होते हैं एकेडमी, जनरली हमने ये देखा है कि आउटडोर इंडोर्स का डेफिनेशन। So sorry for interruption. I think, Sapin sir, can you hear Ravinder sir? Because I think the voice नहीं, is not आवाज audible clearly. आवाज थोड़ी टूट टूट के आ रही है सर। रियली नाउ इट इज जी कमिंग। सर। Yes, sir. Now it's fine. Now it's fine. Yes, sir. हाँ, तो जो हमारे समय में था उसमें आउटडोर्स का बहुत एक्साइटिंग रहता है, क्यों इंडोर आप जैसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसी टाइप का रहता है। बट आउटडोर जो रहता है, हम काफ़ी जल्दी सुबह उठते हैं, उसके बाद में फॉल इन बोलते हैं, हम सब लोगों को सीटी बजती है और हम सब लोग नीचे आ जाते हैं। हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था। और सब वहाँ पे स्क्वाड्स बना दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 90 ये थे आईपीएस प्रोबेशनर्स, तो उनके 6 स्क्वाड्स में हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो जो स्क्वाड्स होते हैं, एक स्क्वाड में लगभग 15 लोग थे। तो उसके बाद में ये जो स्क्वाड्स होते हैं, ये सब उनका जो मार्चिंग रहता है, उनकी परेड जो रहती है, उनकी जो टीम गेम्स रहते हैं, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सब चीज़ें रहती हैं। ये सब बहुत ही एक्साइटिंग रहती हैं। और इसके लिए सब लोग एकदम ग्रुप में रह के ये रहता है कि हम बेस्ट हों, हमारा स्क्वाड बेस्ट हो। So there are girls also, boys. They rub shoulders together. They try to win. They try to defeat others. So that feeling of competitiveness generates there. और आउटडोर्स में दूसरी चीज मैंने ये देखी है, काफी सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठने के बाद में ये सब चीजें कर रहे हैं, और लगभग 8, 8:30, 9 बजे जो है आप इंडोर क्लासेस के लिए जा रहे हैं। इतनी थकान होने के बाद में इंडोर क्लासेस में, दैट्स एक्चुअली टेस्ट ऑफ योर स्टेमिना। कई बार बहुत थकान होती है, नींद भी आती है, और कई बार सो भी जाते हैं कोई ना कोई, बट आपको एकदम से जगा दिया जाता है आप क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये फिर इंडोर क्लासेस, उसके बाद में शाम को फिर से हमारी आउटडोर क्लासेस होती हैं। आउटडोर में जो मैंने आपको बताया गेम्स वगैरह, उसके बाद में कभी कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, उनके लेक्चर होते हैं, तो रात को डिनर भी होता है। तो ये सारा एक सिस्टम वहाँ पे रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें को सिखाई जाती हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फील्ड वर्क, लाइक व्हेन यू वर्क the ASP or the SP, or when you become senior officer, so how to behave, how you have to treat people, आपको किस तरह से रिस्पेक्टफुली बोलना है, आपका फिजिक कैसी रहनी चाहिए, आपको मेंटल स्ट्रेंथ आपकी कैसी रहनी चाहिए। बिकॉज जब आपके सामने कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, तो यू हैव टू बी काम, बट यू हैव टू बी फोकस एंड फर्म। और सीधा जाके आप गोली नहीं मार सकते, यू हैव टू हैंडल इट पीसफुली, क्योंकि आपके जो लोग रहते हैं उसको भी कमांड करना है आपको। वो ये ना हो कि आपके हाथ से कंट्रोल बाहर चले जाए सिचुएशन, और आप कुछ भी हो रहा है उसके बाद में आप बहुत फर्म, हाई हैंडेडली जो बोला जाता है, बहुत बड़ी वर्ड, वैसा ना हो। तो ये सब चीजें कंट्रोल में। वेलकम। He left. He left. He just wanted to give us a glimpse. So this is how वोकल वाली एंट्री होगी सर। हाँ, vocal वाली हो गया। So Safin, I think you can add here a few things. सर जय हिंद सर। Good I am evening, good. sir. Hi. अरे Please speak with us. I think there's some issue with his internet. Yeah. yeah. Safin, you can continue. Yes sir, yes sir. I guess in the last session also we had discussed the same thing probably about training part, and fortunately or unfortunately on a physical training part there has not been any major change.
मैंने उस टाइम भी मेंशन किया था कि देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड उड़ान which was recorded at NPA and उसमें भी जो फिजिकल ट्रेनिंग दिखाई गई है way back in 80s और 90s, I guess we also had the same regime. So We will wait for some time so that you don't disappear again. So he's still, yeah. No, you can continue. He'll join. You can continue. yeah. So the You can overall continue. crux I'm trying from my side. Yeah. overall crux of the training is to remove all the mental blocks which you come with, because everybody is coming from a civilian life. उन्होंने books और normal life के अलावा uniform life देखी नहीं होती. So we had so many limitations in our mind. For example, I never thought that I can run for 16 kilometers at a stretch, or I can walk for 42 kilometers at a stretch with 15 kg load on my shoulders. But yeah, I did all of those things during training, and be it bungee jumping, be it horse riding, be it swimming, I had literally a next level of water phobia, and still I prepared myself for swimming, and I finished the exam also. I cleared the exams also. So diving into 18 feet depth was something I could never imagine, because I had that next level of water phobia. But I did it. I did it, and I finished it, and I cleared it also. So the best part of NP is that whatever you think that you cannot do, they make you do exactly the same things, so that when you are on field, you have no mental block in your inside your head that you actually can't do that. The situation can get worse to any level, but you have that patience in your mind. You have that confidence in your body language as well as in your mind that you can manage those things, and that's how we can lead the force. So that is the major motto of NPO, that they remove all the mental blocks inside your mind, and they shape you into Indian Police Service officer. ये बहुत अच्छा एग्जांपल था. इनफैक्ट मैं भी बोलना चाहूँगा इसमें. मैंने कभी स्विमिंग नहीं किया था लाइफ में, और हम वैसे ठीक है रनिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत. मैंने वहाँ जाके सीखा, और वहाँ हम लोगों को क्लियर करना होता है, मैंडेटरी होता है. अगर नहीं करते तो आपको दोबारा बुलाया जाता है. यू हैव टू क्लियर इट, एंड देन यू गेट योर सर्टिफिकेट. You have cleared the probationer part of IPS. That's very important. And one day I started swimming. So for 500 meters, so that boosted my confidence level. It was one of the incidents which happened when I was swimming one day. Right, sir. Right, sir. So I think this exam really gives you challenges before the preparation and after getting into services. It is all about challenges. More are after getting into service. Right, sir. True. So I would like to ask you, Ravinder sir, as you have achieved so much, like you achieved and you got into civil services, and then after getting into civil services, you achieved so much. So that requires like discipline and routine. And many aspirants like fail to achieve this part. They do not have that discipline in their life. They do not have a routine. So how to maintain a disciplined life and how to sustain a routine in their life? Yeah. See, discipline, you have rightly said, discipline बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं होता, आप सिर्फ प्रिपरेशन में ही नहीं, लाइफ में भी जनरली आप देखेंगे, और डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, so you probably able to succeed or achieve what you want to. So discipline is very important. Like today also, now I have completed more than 25 years. Still, I get up at around 4:35, and has been there since when I was in 10th class. तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं क्योंकि कुंभ मेला के लिए तैयारी कर रहा था, या रात को मेरे को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस टाइम पे शायद नहीं मैं वो दे पाता उतना टाइम. बट जब भी लगता है, सो माय बॉटम लाइन इज कि मेरे को इतने बजे उठना है, मुझे ये चीजें करनी है, या मेरे को क्या क्या दिन में काम करना है. मैं अभी बोलना चाहता था कि मैं आज कर रहा हूँ. आई जस्ट शो यू that this is what I do, my these things. So I keep on striving. ये मैंने, this is part of my routine. This so this keeps me. It doesn't get me waver here and there. तो मेरे वो मुझे ये करनी है. मुझे उठना, मुझे उठ के मेडिटेशन, जिम जाना, रन करना, उसके बाद में
मेरे को वापस आना है, तो अगर ये डिसिप्लिन है, then you can achieve anything. This is how I see, physically also, mentally also, officially also. आप mentally और physically नहीं है आप ठीक से, तो आप क्या achieve करेंगे? आप अपनी life में ऐसी चीजों को देखेंगे, तो ये आपकी किसी भी चीज के लिए ये bottom line important. So my request to all those who are listening today, they must have a firm routine. Try to stick. Like in my case, it doesn't happen 100 times, but I try to be there. मैं थोड़ा सा हटता हूँ, फिर वापस वहाँ पे आ जाता हूँ. It's like it's the center of gravity keeps on pulling me on in that direction. This is how I see, and this is how I do. Right, sir. Safin, so nowadays there are two newspapers that are very, very famous, like Indian Express and The Hindu. And aspirants are always confused that whether to go with both of them or just choose one. So, what do you suggest that they must read both the newspapers together or just go with one, stick to one newspaper properly? Because Indian Express and The Hindu are like equal to each other, I think. See, I won't name any particular newspaper agency, but from last 1 or 2 years, what I have noticed is that one particular newspaper is leaning to one side, okay, which is not good for a balanced thinker or to have a critical outlook. So I just advise all the aspirants that stick to the one which gives you the balanced reporting, which gives you pros and cons of everything, which has not any, not leaning to any one particular side, so that you will have that balanced outlook. What happens is that if you are too critical about something, you will have eventually you develop that thought process, which will always be very critical about everything, and which is not good for a civil servant, right? You should have that vision to see both positive as well as negative sides about each and everything. It's not only about looking at negative sides, it's also about appreciating the positive side. It's also about appreciating the negative sides and finding out the constructive solutions. So, with the newspaper which provides you both the things, critical analysis as well as constructive solutions, go for that particular one. Before mains, I don't think there is need for two newspapers. For interview, you can refer to 2-3 newspapers so that you can have various perspective, diverse perspective about one particular issue. Right, sir. So, yeah, fine. Now, I guess. There is some serious issue, I guess. Actually, he's having some network issues. So he's trying to connect, but then I'm really sorry. Please continue. Yes, sir. Ravindra sir, now there are a few people, there are like generally, I'm not just talking about aspirants, generally people do not know how to find their passion in life, find their purpose in life. Now, so they're mostly struggling with this thing, ki mera passion kya hai exactly? Like people say, mostly motivators and life coaches tell us that you have to find your purpose, you have to find your passion in life. So how to find that passion? How to find that purpose of your life, that what you want to do, what you are here for? Yeah. See, I see it this way. Whatever makes you happy, that should be your passion. So the happiness one should derive. I was an engineer. I'll give my example. I was working. Well, I think somewhere I was not happy. But since I joined uniform services, since my dad was also in police service and I saw him, there was some connect or something which was not making me uh, happy to the fullest. But since I've joined this police force, I thought that I found my purpose. So you will have to look for it, and that answer will come from your inner self only. You will have to consistently ask yourself कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है. अब कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस में आके भी खुश को दूसरी साइड इनकम टैक्स में होता तो अच्छा रहता. So there will be people who never. Because of life, what you have, एक स्टेज ऑफ लाइफ you are, अब जहाँ पे हैं उसमें खुशी. Sorry, sir, your voice is cracking. Your voice Is is it cracking a bit.
I'm sorry, this as we are growing ahead technologically, internet wise, I think things are going bad. I don't know why. We'll have to. Are you getting me? Are you getting me now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So purpose, again, it keeps on changing with the stage of life. Today maybe I have done a lot of policing, but what next? That happiness, that purpose, I'll have to seek, and the answer will come. Go to 100 people and ask them what should be my purpose, what will give me happiness. Some people find happiness if they get a lot of money, if they get promoted, they get happiness. But is that your purpose, whether they're happy or not? सो ये चीजें जो है ये चेंज भी होती रहती है समय के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि आपको खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा. यू क्लोज योर, यू आंसर्स, stay with yourself, maybe in the morning for some time. This is how I see finding purpose of your life. So when I don't know Right, it is sir. more philosophical, but trust me, I No, do no, it. sir. It In was the, directly hitting the bullseye, sir. yeah, I sit, talk to myself on those. I give around 2 hours to myself. Plan for my day. I plan for my life in fact that way. Sir, that's how Sure. practically it should be, sir. For sure. Mhm. Completely agree, sir. Thank you. Safin sir, Safin sir, coming to you, there are a few people who have got struggles at home, who have financial problems or maybe personal problems, and then they have to prepare for this examination. And while preparing for this examination, they need to have a single minded goal, like they do not have to concentrate on two or three things together. So, how to deal with those situations when you have problems at home, when you have health problems or health issues, and then you're preparing for this exam also? See, everybody is having a unique situation. No two aspirants have a similar situation to prepare, and nobody has that ideal situation also to prepare. Everybody must be facing some or other issue in their life. Maybe it may be mental, maybe psychological, physical, health issues, financial issues, societal issues, whatever it may be. But when you are clear about your goal, I guess those issues don't matter much. If there are issues, if there is struggle, that means you are moving forward, right? If your journey is getting tougher and tougher day by day, that means you are climbing up and up. If it is getting simpler, if it is getting easier, then that means you are, on a descending path. So you must give yourself that motivation that if you are facing problems, that means you are going ahead. You are moving forward, and there is no smooth road for any beautiful destination. So if you have planned high, if you aim high, if you want to reach somewhere where people recognize you, when people consider you as successful, struggle is inevitable. You have to accept the fact कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपको ये बंदा सपोर्ट कर रहा है, आपको ये बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है. Once you accept the reality to the fullest without any complaint, I guess it becomes easy to deal with those things. काफी लोग ऐसे होंगे आपके सराउंडिंग्स में जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएंगे कि ये आपके बस की बात नहीं है. एक्चुअली दे से बिकॉज उनको लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, राइट? तो इन सारे लोगों को जो जवाब देना है वो आपको सक्सेसफुल होकर देना है. लेट योर सक्सेस स्पीक, स्ट्रगल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस शाउट, राइट? एंड दैट इज वेरी ट्रू. फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और वो बात बहुत डट के कही गई है, and it is true in all circumstances. We must respect whatever the difficulties we get in our life, and we must think कि how to get over those. आपके पास मैंने पहले भी बताया हुआ है, हर सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप सिचुएशन को पकड़ के बैठ के रो लो, या फिर आप वहां से आगे हो लो, राइट? तो अगर आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे या सोसाइटी नहीं मान रही है, you accept it and now you move forward, you find the solution and you move ahead, right? And once you start moving ahead, the journey becomes easier. So instead of focusing on the walls, focus on the road. It will definitely lead you to somewhere, Right, sir. right? रविंद्र सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक आप दोनों इंडियन पुलिस सर्विसेज में हैं, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स यहाँ पर अभी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस सर्विसेज के लिए ही एम कर रहे होंगे.
So what would you like to tell them कि कैसा job profile होता है, किस तरीके से उनको अपना mindset रखना चाहिए if they are willing to get into Indian Police Services? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास में जो सिचुएशंस आती हैं हर रोज अलग अलग तरह की होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम, क्रिमिनल आता है, विटनेसेस आते हैं सामने, और विक्टिम आता है। तो ये बहुत स्ट्रेंज सी सिचुएशन रहती है। ऐसे केसेस आते हैं कि किसी बच्चे को छेड़ दिया किसी ने, या फिर सीनियर सिटीजन है उसके साथ में हादसा हुआ, उसको उसको फ्रॉड करके उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। तो ये हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन हैं। उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, अगर मैं अपना पूरा दिन देखता हूँ सुबह से लेके जब तक मैं घर पे आता हूँ, उसके बाद में भी इतनी तरह की चीजें आती हैं हमारे सामने। कभी कोई बच्चा आ रहा है, उससे भी हमको इंटरेक्ट करना है, पॉलिटिशियन है आगे हैं तो उनसे भी इंटरेक्ट करना है, कोई लेडी आई, कोई senior और हमारा खुद का स्टाफ भी। सी हाउ रोल कीप्स ऑन चेंजिंग। In that situation, person is same, but his role is continuously changing. So for that, what you have to do is you will have to prepare yourself. You cannot react to each and every. आप ये नहीं कर सकते कि they would like to listen to what you say. They would like to talk to you. There will be many people, you know, but even Safin would also agree. कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं कि तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, आपको सिर्फ देखना चाहिए। इस तरह के भी लोग आते हैं। सोचिए कि किस सिचुएशन में लोग काम करते हैं, और आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज इफ आई डोंट बिहेव प्रॉपरली विद वन पर्सन, वो जाके पूरे बाहर जाके ये ये है तो सोच, तो ये तरह नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। इसी वजह से आपने देखा हो कई बार हमारे कांस्टेबल हो या फिर पुलिस हो, तो अगर कुछ बिहेव करते हैं तो वायरल हो जाता है। वो सपोर्ट कि वो आदमी क्या सोच रहा था, उसकी भी फैमिली है, या अगर अपने चेयर में हूँ तो मेरी भी फैमिली है, मेरे कुछ चीज़ें हैं, बट वो कोई वो सुनना नहीं चाहता। वो सोचता है कि हम से सीपी से या पुलिस वाले से मिलने के आए हैं। इट इज ड्यूटी टू लिसन एंड गिव जस्टिस, गिव इंस्टेंट जस्टिस आल्सो, व्हिच अगेन इज वेरी डिफिकल्ट। दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। तो मेंटली तो बहुत अच्छे से की जरूरत है, फिजिकली बहुत अच्छी जरूरत है, और आप कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका खुद का स्टाफ की भी उनका वेलफेयर भी आपको देखना है। में मान लो पुलिस लाइन में पानी नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास में आके बोलता है कि साहब हमको पानी नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो ऐसी कितनी सारी सिचुएशन है। तो इट इज अ वेरी ट्रिकी एंड आप तो अगर सबको सिर्फ सुन भी लेते हैं और उनका काम कर देते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आप नहीं कर सकते, पर आपने अपने ऑफिसर को फोन कर दिया कि मैं इनको भेज रहा हूँ और इसके ऊपर एक्शन लो, तो वहीं से ही आपका इमेज, आपके बारे में पॉजिटिविटी, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी इमेज बनना शुरू हो जाता है। सो ये सब चीज़ें बहुत, जैसे बोलते हैं ना, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड ऑफिशियली सब चीज़ें आपके एकदम से अलाइंड होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं होता देन यू आर इन ट्रबल। देयर इज नो फ्रेंड ऑफ योर्स, कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा। इवन मीडिया कीप्स ऑन वाचिंग कि इसने कहाँ पे गलती की है, तो वो आपको हाईलाइट करते हैं। ट्विटर आजकल आ गया, या सोशल मीडिया, कहीं पे भी। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिचुएशन सो दैट पीपल डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Safin sir, something from you. So I would like to inform you both that we'll be waiting for like 5 more minutes, and if Navneet sir isn't able to join, then I'm really sorry to everybody and you both that we might have to end this session like this. Ma'am, there is no need to be sorry. We can arrange another session when sir is in area where there is a good enough network. But yeah, regarding the service and IPS the service, definitely it's a good satisfying experience till now so far. सर का तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है, मेरी जितनी उम्र नहीं है सर की शायद उतनी नौकरी हो चुकी है, तो he is the right person to speak on that. But yeah, definitely this 1.5 years of field experience has been very satisfying. सबसे बड़ा इशू या सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हमारे लिए कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स
कि अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक साइड कमोडिटीज या कोई चीज होती है और दूसरी साइड लोग होते हैं। तो आप कहीं पानी का इश्यू है, कहीं बिजली का इश्यू है, कहीं रोड्स का इश्यू है, राइट? तो आप या तो रोड देते हैं या नहीं देते, पानी देते हैं या नहीं देते। फॉर अस देयर आर पीपल ऑन बोथ द साइड्स। तो आप किसी एक को अगर सुनोगे, दोनों को सुनोगे, लेकिन आपको एक्शन तो किसी और एक की फेवर में लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिसअपॉइंट अनदर पार्टी फॉर श्योर, राइट? एंड यू नेवर नो कि वो डिसअपॉइंटेड पार्टी कहाँ तक जाने वाली है और वो किस लेवल तक आपके अगेंस्ट जाने वाली है, बिकॉज वी आर ऑलवेज थर्ड पार्टी इन द मैटर ऑफ टू पीपल, राइट? सो दैट बैलेंस्ड अप्रोच एंड दोनों को साथ में लेके चलना is the main task we have to do, right? At the same time, since IPS is more towards the management side, right? We are in a managerial position where we have to lead a team. We have to see the welfare. We have to see that law and order is maintained. We have to see that all the kind of scenario is maintained. That's where your I can say manpower management abilities come into picture. So that's where it becomes very tricky. एक बाजू मीडिया होता है, एक बाजू पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, एक बाजू पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है और एक बाजू आपकी अपनी फोर्स है जिसको आपको मोटिवेट रखना है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके के बाद आपको आपकी पर्सनल लाइफ भी देखनी है। ऑफ कोर्स इट्स वेरी टफ ड्यूरिंग योर एएसपी शिप एंड फर्स्ट फ्यू years of SP ship, where things are actually always new for you. Sir would definitely agree with that. जिसमें आपको पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैकफुट पे भी शायद रखना पड़ सकता है, क्योंकि यू नीड टू ऑलवेज परफॉर्म, और वो एक सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट रहता है। बट ओवरऑल जैसे कोई सुनसान रास्ते पे अगर कोई लड़की अकेली जा रही है, उसको लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है जहाँ पे और कोई नहीं है रात को 2 बजे, और अगर दूर से उसको एक रेड और ब्लू लाइट दिख जाती है और फिर उसको जो सेंस ऑफ सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन फील होता है, दैट इज व्हाट वी वर्क फॉर एंड दैट इज व्हाट वी आर प्राउड ऑफ। Right, sir. Oh. सर अभी कुछ टाइम में प्रीलिम्स है, लाइक हार्डली 50 days are left for the prelims, upcoming prelims. So what would you like to suggest and what would you like to advise those aspirants जो इस बार prelims दे रहे हैं? Both of you, sir. Ravinder sir, first you. So prelims के लिए सबसे पहले तो I wish them good luck, और आप जो करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ और बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ में आप लोग एंटर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एंटर कीजिए। मेक एवरीथिंग क्लियर कि आप किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपका ऑप्शनल है और उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड नॉट बी एनी वेगनेस इन दीज थिंग्स। तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है वो ज़रूर देख लीजिए। करंट अफेयर्स जो है वो एक आपका क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि क्या क्या अब आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स में। जैसे हमने पीछे भी चर्चा भी की थी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यू आर सेइंग समथिंग? हाँ, No sir, right sir. सो बुक्स का भी आप ज़रूर कर लीजिए। मैंने अपने वेबसाइट में भी लिखा है कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं, तो वो एक आप वेबसाइट पे मेरे देख सकते हैं, या फिर आप दोबारा चाहें तो प्रिया वी कैन अगेन सेंड लिस्ट ऑफ बुक्स विच कैन हेल्प देम। और सी सेट के लिए because this is a new concept which was not there in our time, but of course you must know how to prepare, what books to be referred to. ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन हैव अ ग्रुप स्टडी ऑल्सो, अगर आपके पास में टाइम कम है तो अगर 4 लोग या ग्रुप में आप पढ़ते हैं, इट विल ऑफ कोर्स हेल्प यू। यू मे ज्वाइन सम क्लास ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन, या आप रिवाइज करना चाहते हैं या वहाँ पे कोई आपको नई चीज़ मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। परंतु वही करना है ऐसा भी नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सजेशन। आपका ऑप्शन जो है उसमें बहुत आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं वो ऑप्शन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, मेरा लेवल, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, या बुक के ऊपर ही आप उसको साइड पे कहीं पे स्पेस में लिख सकते हैं वो पॉइंट्स को, सो दैट आप उसको जब टाइम कम रह जाता है उस टाइम पे आप उसको रिवाइज अच्छे से
कर सकते हैं, कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे उसको, तो वो भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। और कुछ जो आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं जरूर उसके एक पॉइंट्स बनाते रहिए, क्योंकि दे विल ऑलवेज हेल्प यू। नहीं तो आप भूलते रहते हैं, आपके दिमाग में कुछ आ गया, जस्ट राइट इट समवेयर, और उन 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 पॉइंट्स पे ज़रूर दोबारा से उसके बारे में सोचें, किसी से बात करें अगर आपको उसका सॉल्यूशन या आंसर नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह की प्रिपरेशन आपकी रहनी चाहिए कि जिसमें आप कोई भी पॉइंट ना छोड़ें, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। So all these things you must know, and your preparation should be in 360 degrees. So it can be asked from anywhere. So mentally you will be at ease कि ठीक है मैंने पढ़ा तो है. So you must be aware of everything. You may not master everything, but you must know, so that during the elimination round आपको जो 4 choices हैं उसमें से कम ये तो आंसर है ही नहीं इसका, या ये आंसर हो सकता है, ये आंसर ज़्यादा अच्छा है। सो वो the how you can eliminate the options, that is also very important। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आजकल ऑनलाइन भी आते हैं प्रिपरेशन के लिए पेपर्स, या फिर आप पेपर जो अपने ऑफलाइन जो मिलते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट वो ज़रूर कीजिए। जैसे और उससे आपको फ़ायदा भी है, जैसे आप 2-3 घंटे में पढ़ लिए फिर आप बोर हो रहे हैं, तो आप इमीडिएटली वो आंसर क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाओ, क्वेश्चन से बोर हो गया फिर से आप सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर जाओ। सो दिस वे यू विल कीप योर सेल्फ एंगेज, because time is less, and that will keep you engaged, that will keep you fresh also। तो ये सब चीज़ें आप इंटेलिजेंटली करेंगे तो इन चीज़ों का बहुत आपको फ़ायदा होगा। और आप ये समझ के चलें कि मैं क्रैक करने वाला हूँ, मुझे क्लियर करना ही है, मेरे पास नेक्स्ट ईयर के लिए टाइम नहीं है, ऐसा आप सोच के कीजिए। 100% उसको दीजिए, क्या कमी रह गई उसके बारे में सोचिए, और उसके ऊपर ज़रूर अलग से दोबारा से प्रिपेयर कीजिए। Right, sir. Thank you, sir. Sir, I think internet today was really disappointing. We couldn't get Navneet sir here, and I think Safin sir internet was also not working, so No he issues. also left. Yeah. But it was a good conversation. Like we did talk about the preparation, how to start the preparation, how to keep oneself motivated while you are in the preparation. So I think we'll need to have another session Yeah, but in having that you all. we will answer to the questions. Now today also many questions have come. Make a list of these Right, questions so that we will right, talk, because generally I find that the questions are repeated. So if we can have right, sir. few questions, we will only answer and we will not spend time on discussions. Most of this. I think that will be a Right, better sir. correct. Right, sir. Thank you so much for your Thanks, time. Priya, and I would also like to thank your team, especially Abhijit Nikam. He has been instrumental in bringing us all together and for giving us this opportunity. Then we have Digvijay Bhatt, who has been instrumental in interacting and tying all the loose ends. My compliments and thanks to him. Then Vinay Bharti also, who has been there always consistently talking, interacting, and supporting the whole team. We have Komal Singh also. Thanks to Komal also. Then finally Shubham Kumawat. Thank you, Shubham. You all are beautiful team. Keep it up, because आप ये सोशल वर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे टाइम में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। आज सीनियर ऑफिसर से बात कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ओनली थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू योर टीम। सो ऑल दोज नाउ आल्सो दे अबाउट 1600-1700 candidates hearing to me and to us। इन लोगों को अगर इनके एम्स हैं, एम्बिशंस हैं, तो मुझे लगता है कि इस सेशन से काफ़ी लोगों की कई चीज़ें क्लियर होंगी जो हमको जनरली पॉसिबल नहीं होती किसी ऑफिसर के पास में जाके मिलना। नाउ एटलीस्ट दे कैन हियर Right, ऑफिसर्स कैसे होते हैं, उनको उनका बोलने का क्या, किस तरह से बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे मालूम है व्हेन आई वेंट टू शिरडी में मैं
दर्शन का वेट कर रहा था और वहाँ पे एक यूनिफॉर्म में था. ही वाज नॉट अ पुलिस ऑफिसर बट स्टिल हम उसकी तरफ देख रहे थे, हाउ ही वाज रिएक्टिंग, हाउ ही वाज कंडक्टिंग द होल शो. सो दैट्स द पावर ऑफ यूनिफॉर्म, यू नो, दैट वो डर रहता है जो, पर हम इनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, विच आई थिंक शुड हेल्प देम, दैट विल एक्चुअली boost their moral and their state of mind. That is going to help them. Best wishes to all those who are connected even now. Thank you so much, Priya. Thank you, sir. Yes, you're right. Actually, I think the mere presence of such person in your life, and somewhere when you can find that person ki ha uniform mein hai, that is inspirational, that is motivational. You look up to him कि वो कैसे act कर रहे हैं, we have to do the same. Thank you. And कोई books के बारे में पूछे तो for books you can check on my website Ravinder Singal. You can have a list. I have tried my best to put there. अगर और भी कुछ उसमें नहीं हो पाता तो we can again come and we can discuss about books again. Maybe those who have recently joined services or through UPSC, उनको उनके साथ भी हम लोग interact कर सकते हैं, so that one to one from the new group Right. of that will be better. Sure, sir. Sure, sir. I'll also put your website in the that note section while posting this video. Yeah, please do that. So I think it will be useful for everybody. Yeah, thanks. Thank you, sir. Thank you. So much. God bless Good you. evening, sir. Good evening. Thanks.